भूर्भुवस्वः भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् Hello student, how are you all? Okay, so I hope you are well and good at your home. Soon might be you got the news for the opening of the school. I guess open हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर ही शायद हम मिल पाएंगे फेस टू फेस. राइट नाउ तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज बहुत टाइम से वीडियो लेक्चर्स ही चल रहे हैं. राइट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि probably open हो जाए and we face each other. Okay, now last we have done with the revision of chapter number 4, division, right? Okay, see we have done with the chapter miss revision का मैं आपको बता देता हूँ कि कितने chapters का हो गया है. We have done with the 3, 4, 5, 6, 7, which is multiplication, division, factor, फ्रैक्शन, डेसिमल. राइट, सो इतने चैप्टर्स का हमारा डिवीज़न ऑलरेडी हो गया है. अभी पहले कोर्स पेपर से स्टार्टिंग से मैं करवा रहा हूँ, ठीक है. नाउ नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर द 7, चैप्टर नंबर 8, ज्योमेट्री. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 8, geometry. Okay, so in this one let's warm up all the things: one dimensional, two dimensional, three dimensional figures, one dimensional lines, lines we got, line segment, ray. line किसको बोलते हैं? It has a two ends, right? No, line it has a no end. लाइन सेगमेंट को दो एंड्स होते हैं, रे को एक एंड पॉइंट होता है. एंड पॉइंट और एंड वी कैन से दैट लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन द बोथ डायरेक्शन. रे कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन and line segment cannot be extended because it has a fixed defined length. These are the one dimensional figure. Two dimensional figure, all the types of shapes. We can say that उसमें हम polygons देखे थे हमने. polygon किसको बोलते हैं? It's a kind of closed figure which is made up of only straight line. उसको क्या बोलते हैं? polygon बोलते हैं. Then first जो starting polygons था हमारा, which is triangle, जो 3 साइड से फॉर्म होता है. देन आफ्टर 4 साइड वाला जो था उसको बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटर्स, जिसमें अलग अलग एग्जांपल्स आते थे, which is called parallelogram and trapezium, which are the 2 examples. These are, we can say that. Then after parallelogram के बहुत सारे पार्ट्स आते थे and trapezium it's a single one. Okay, let's do this one by one, all of the things. Then after at last we can we have seen the one more property for the circle also, right? Okay, let's start that one. And at last 3D objects, उसमें हमने already बहुत कुछ कर लिया था. In this one we just have to find the edges, vertices and faces only, right?
सो यही चीज़ इसमें हमें फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड की कितनी फेस होती है, कितनी एजेस होती है, कितनी वर्टाइजेस होती है। देन सो दिस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस is there in this chapter. Okay, so points and lines का तो हमने already explanation revision हो गया. Next, type of the line. So 3 types of the lines are there. Vertical, horizontal and slanting, or we can say that oblique lines. Then so these are the types of the lines. Next, lines. So in the pair of lines we have also 3 types of line. First one, intersecting line. Okay, what is called the intersecting line? Pair of the point, if the line intersect at one point, so this kind of lines are called the intersecting line. Next type of pair of line is parallel line. Parallel line किसको बोलते हैं? If the two lines are not intersect at any point, so that type of line is called a parallel line. And at last, perpendicular line. Now what is called the perpendicular line? If the two lines are intersect and make a L, यहाँ पर आप अगर ठीक से देखो तो यहाँ पर ये L शेप फॉर्म हो रहा है, राइट? परफेक्ट L, ऐसा ही L होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं चलेगा। अगर इसके जैसा होता है then and only then you can include that type of line in this one. So अगर इस तरह का L शेप फॉर्म हो रहा है तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन, राइट? एंड परपेंडिकुलर लाइन उस इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होता है उसको वो राइट एंगल होता है। ओके, नाउ एंगल से याद आया, एंगल्स ऑल्सो वी हैव सीन व्हाट इज द एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी एंगल किसको बोलते हैं? व्हेन टू लाइंस आर मीट, और वी कैन से दैट इंटरसेक्ट, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है तब यहाँ पे जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं एंगल, राइट? लेट्स टेक दिस रिवीजन ऑफ दैट आल्सो। नेमिंग ऑफ द एंगल, एंगल का हम नाम कैसे दे सकते हैं? ये दिस आर द वन रे, लेट्स से दिस इज O A ray and this ray is OB. Then so before the naming of the angle we have to see that इन सब को क्या बोलते हैं? This is called vertex, these are called, this both rays can called arms, then and this is our angle. Understood? Okay, now how can we name that angle? अगर हमें यहाँ पे एंगल को नाम उसका नाम देना है, so we have 3 method for that. 3 मेथड है उसकी. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द साइन ऑफ द एंगल. ये एंगल का साइन है. Before we write any angle, we have to put this sign, right? Now, one major thing you have to remember is कि vertex को हमें मिडल में रखना है. Arms, vertex, arms. उस तरह से हम
कोई भी एंगल का नाम दे सकते हैं. से फॉर एग्जांपल name of this angle we can write like that, A, then after vertex, then after another. Second way also we can write like that also, arm, vertex, arm. Then और अगर सिर्फ अकेला एंगल होता है then we can write like that also, angle O. We can read this angle like a एंगल AOB. AOB ये क्लोज हो जाएगा, वो आपको देखना. एंगल BOA. BOA. Then we cannot write the name of the angle likewise that BAO. इस तरह से हम नहीं ले सकते. Why? Because as you can see that BA यहाँ पर है, B और A के बीच में कोई लाइन है नहीं. इस तरह से हम नहीं लिख सकते. और एक रूल हमें याद रखना ही है, जैसे जो मैंने पहले भी बोला कि वर्टेक्स जो होती है वो आपको मिडल में रखनी है, सेंटर. उसके आजू बाजू में आप कोई भी वाला आर्म्स ले सकते हैं. देन नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ द एंगल. नाउ टाइप्स ऑफ एंगल. Okay, now here we have 3 types of angle mainly. Type of angle: acute, acute angle, right angle, and obtuse angle. पहले हम सीखेंगे राइट एंगल क्या होता है. सॉरी, रिवाइज करेंगे. अगर एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है तो उसको राइट एंगल बोलते हैं. अगर एंगल का मेजरमेंट मोर देन 90 डिग्री होता है तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं. अगर एंगल का मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री होता है तो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं. राइट. सो दिस आर द 3 types of angle: less than 90 degree, then acute, 90 degree, perfect, right, and more than 90 degree, obtuse angle. Let's move to the next topic. Okay, so this we have done with the angles. Now polygons. पॉलीगॉन्स में हमने पहले भी रिवीजन ऑलरेडी हो गया. जस्ट लेट्स पैक टुगेदर ऑल द फॉर्म्स. व्हाट इज द पॉलीगॉन्स? सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन. क्लोज कर्व जब स्ट्रेट लाइन से बनता है तो उसको पॉलीगॉन बोलते हैं. राइट. नाउ वी हैव अ नंबर ऑफ एग्जांपल इन दिस वन. फर्स्ट जो 3 साइड से बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? ट्राइंगल बोलते हैं. Then this is called the triangle. Then after जो 4 साइड से बनता है उसको हम quadrilateral बोलते हैं. This is called the quadrilateral. Although quadrilateral में बहुत सारे टाइप्स होते हैं. That we can say that the types of quadrilateral. Which is our next topic. And probably the last topic. Then after just one thing is remaining, which is the circle only. So we have a number of quadrilaters. Let's just revise all of them at a time. First one, parallelogram.
So what is called the parallelogram? Opposite sides are equal and parallel. This is ये जो मैंने लाइन की उसका मैंने क्या होता है कि वो इक्वल है? So his opposite sides are equal and parallel, और वो parallel भी है, तो इस टाइप की इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं पैरेललोग्राम। अभी इसमें और बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर सारी की सारी साइड्स अगर सेम हो जाए, इन दिस वन अगर सब साइड सेम हो जाए ऐसे जैसे, इसमें एक कंडीशन सिर्फ ऐड की है मैंने, ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल तो है बट सभी सारी की सारी साइड सेम है, तो अब इसको क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं। ना अभी अगर रोम्बस की सारी साइड तो सेम ही है, बट जो इसके एंगल्स हैं अगर वो सारे के सारे एंगल्स राइट एंगल हो जाए, दैट मीन्स 90 डिग्री एंड ऑल द साइड्स आर सेम, तो ये वाली फिगर तो हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। If in the parallelogram only one condition if we add that he opposite sides are same and parallel and all angles are right angle, then this kind of figure we can call a rectangle. Then okay. And then after other type of quadrilateral that we have seen is somewhat like that. इसमें बहुत सारी figures आ सकती है. In this one we just have to see that we just that type of quadrilateral is called a trapezium. क्या बोलते हैं उसको? Trapezium बोलते हैं. And as per that, in this one there is just one pair of parallel line, which is this one. ये सिर्फ एक ही parallel line होती है, pair of parallel line, that means ये दोनों line सिर्फ parallel होती है, but वो equal नहीं होती है। तो इस तरह के जो quadrilaterals होते हैं उसको बोलते हैं trapezium. Okay, so these are about the polygons. Then after we have seen about the circles, center of the circle, radius क्या होती है, relation between the radius and the diameter जो होता है वो उसका अगर उसका half कर दे, then we got the radius. So these are the number of things are there in this chapter. That's it for today then. In the homework meanwhile you can complete chapter number 8 of revision sheet in the revision sheet only. Well, that's it for today from my side. Bye bye everyone.